आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेपीएससी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट का 2023 में होने वाले एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चंस आए थे और उनके आंसर्स क्या है। क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट मोनोकोटिलिडन सीड्स। मोनोकोटिलिडन सीड्स का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसका आंसर है सी पार्ट। दे हैव ए वेल डिफाइंड सेपरेट सीड कोट एंड फ्रूट वॉल। ये गलत है। मोनोकॉट सीड्स में सीड कोट एंड फ्रूट वॉल फ्यूज्ड होते हैं, सेपरेट नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 2 इन द फ्लोरल फॉर्मूला व्हाट डज जी टू विद इन ब्रैकेट मीन। इसका मतलब होता है जो फ्लावर है इसमें दो कार्पल्स है और कार्पल्स फ्यूज्ड है और जो ओवरी है इट इज इंफीरियर। क्वेश्चन नंबर 3 रीड द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए पेपिलियोनेशियस करोला इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉल्वेंसी। ये गलत है। Papilionaceous corolla is found in which family? Fabaceae family. Statement B. Papilionaceous corolla has a posterior standard, two lateral wings and two anterior forming a keel. ये ठीक है. So statement A is incorrect but B is correct. The floral formula जो दिया गया है ये किस फैमिली का है? इसका आंसर है D part Liliaceae. Question number 5. Which of the following is the most abundant protein in biosphere? इसका आंसर है B Rubisco. Question number 6. Among four options, water potential is determined by. इसका आंसर है 1 and 3. That is solute potential and pressure potential. Question number 7. Read the two statements A and B carefully and answer the following. Statement A. Guttation is loss of water from leaks in liquid form. ये बिल्कुल ठीक है. Statement B. High root pressure is responsible for pushing some water to some height. ये बिल्कुल ठीक है. इसका आंसर है A is assertion and B is the reason. बिल्कुल correct. Which of the following is not true about transpiration? इसका आंसर है it is independent of abiotic factors. ये गलत है. Transpiration is dependent on abiotic factors. Match the type of life cycle with their correct examples and mark the correct option. तो यहाँ पर दो कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए में लाइफ साइकिल के टाइप्स है, कॉलम बी में एग्जाम्पल्स है. इनको मैच करना है. इसका आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन है हिप्नोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल स्पोर्स फॉर्म्ड इन एल्गी. बिल्कुल ठीक है. रीजन है हिप्नोस्पोर्स आर फॉर्म्ड टू ओवरकम पीरियड ऑफ डेसिकेशन. बिल्कुल ये भी ठीक है. तो इसका आंसर है सी बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन जस्टिफाई द असर्शन. क्वेश्चन नंबर 11 लेमिनारिन इज रिजर्व फूड मटेरियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एल्गी. इसका आंसर है फियोफाइसिया. क्वेश्चन नंबर 12 quadriflagellate macrospores are found in which of the following. इसका आंसर है यूलोथ्रिक्स. Question number 13 the botanical name of Irish moss. Irish moss का scientific name है Chondrus crispus which is a red algae and the economically important product it yields is carrageenan. तो इसका आंसर है D part. Red rust of tea is caused by. इसका आंसर है Syphiluros virescens. Question number 15 which of the following statement best describe holocarpic fungi. इसका आंसर है unicellular fungi in which whole vegetative cells is transformed into reproductive unit. Question number 16 in which of the following group of fungi sexual reproduction does not occur. इसका आंसर है Deuteromycetes. Question number 17 members of division Myxomycota are known as. इसका आंसर है slime mold. Question number 18 match the following disease with its correct causal organism. इसका आंसर है D part. तो यहां पर आप देख सकते हैं. Which of the following mode of reproduction is not observed in Saccharomyces. इसका आंसर है Oogamy. Heterokaryosis was observed in. इसका आंसर है Botrytis. Which of the following is the correct sequence followed in gram staining? इसका आंसर A part. क्रिस्टल वायलेट को पहले डाला जाता है बैक्टीरिया पर, followed by gram iodine, then we have ethanol and then we have safranin. Bacterial cell wall is made up of. इसका आंसर है N-acetyl glucose amine and N-acetyl muramic acid. Which of the following helps in bacterial respiration? इसका आंसर है mesosomes. अगेन यहां पर मैच करना है आपको कॉलम A को B के साथ. इसका आंसर है B. Which of the following are pathogenic prokaryotes without a cell wall and are highly pleomorphic. इसका आंसर है mycoplasmas. Match the following. इसका आंसर है A. यहां पर आपको देखना है किस वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. Which of the following are the characteristic feature of virus? इसका आंसर है B. They are devoid of polysaccharides and they possess only one kind of nucleic acid. 28. Which of the following is not included in embryophyta? Algae. Algae के लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो नहीं बनता है. Which of the following statements best define apospory? इसका आंसर है development of gametophyte from vegetative cells of sporophyte other than spores. Question number 30. Which of the following characters are common between algae and bryophyta? इसका आंसर है all of the above. Which of the following is an aquatic species of Rixia? Rixia is a genus of bryophyta. इसका आंसर है Rixia
flutens. Question number 32. Read the two statements A and B carefully and answer the following. Statement A is protonema is the transitory vegetative stage found in Bryophyta. बिल्कुल ठीक है. Statement B is protonema in some species helps in reproduction. ये भी ठीक है. Both A and B are correct. Next question is development of sporangium from single initial cell is known as. इसका आंसर है leptosporangiate. Sporangia bearing structures found in some aquatic pteridophytes are known as. कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं, खासकर एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स, जिनमें कुछ ऐसे खास स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनके अंदर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं स्पोरोकार्प, एज सीन इन मार्सिलिया. टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स इन हैविंग वेस्क्यूलर कैम्बियम. Pilum theory was proposed by Zimmermann. Non-modulated stele consisting of a central core of xylem surrounded by phloem is known as protostele. तो protostele में pith center में नहीं होता है, xylem center में होता है, surrounded by phloem. Actinostele star shaped xylem जिस stele में हो उसे कहते हैं actinostele. Read the two statements A and B carefully and answer the following. Statement A. Pilum is simple ultimate terminal portion of a dichotomously branched axis. बिल्कुल ठीक. Statement B. Planation and reduction are the elementary process involved in the evolution of higher plants from vascular cryptogams. तो ये दोनों statements बिल्कुल ठीक है. Which of the following characters are common between angiosperms and gymnosperms? इसका आंसर है 1, 2 and 3. फोर्थ क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होती है. Members of which group are also known as seed ferns? इसका आंसर है Cycadoflicales. Which among the following received Nobel Prize for their work on CRISPR Cas9? इसका आंसर है जेनिफर डॉर्डनर एंड एमेनुला शार्पेंटियर. Who coined the term enzymes? का आंसर है फ्रेडरिक कोहने. Which of the following statements about enzymes is incorrect? They are made up of only amino acid. कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, जैसे राइबोजाइम्स, और बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट की भी जरूरत पड़ती है, जिसे कोएंजाइम्स कहते हैं. रीड द टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग. स्टेटमेंट ए. एंजाइम्स कैटालाइज रिएक्शन. बिल्कुल ठीक है. स्टेटमेंट बी. एंजाइम्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी. ये भी बिल्कुल ठीक है. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी एक्सप्लेन्स ए. Which of the following depicts the Michaelis-Menten equation? B इसका आंसर है. Migration of protein in a gel during SDS electrophoresis is a function of only size. Which of the following is used to give uniform negative charge on protein? SDS sodium dodecyl sulfate को यूज किया जाता है, जो कि प्रोटीन्स पर यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज देता है, so that proteins can be separated only on basis of their size. During isoelectric focusing, proteins stop moving in gel when they attain net zero charge. Functioning of which of the following instrument is based on Lambert-Beer's law? This is spectrophotometer, जो कि एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, और जो कि किस लॉ पर फंक्शन करता है? Lambert-Beer's law. Match the amino acid with the correct side chain. तो इसका आंसर है बी. एरोमेटिक टायरोसिन होता है, आपको पता ही है. सल्फर किसमें प्रेजेंट होता है? मिथ्योनिन में प्रेजेंट होता है. नॉन पोलर एलिफेटिक आर किसमें प्रेजेंट होता है? ग्लाइसिन. एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप किसमें होता है? एस्पार्टेट में. द फर्स्ट amino acid to be discovered was glycine. Which of the following statements are true about histone? 1 and 2. They help in the coiling of DNA. They are rich in arginine and lysine. Question number 4. We have introns were discovered by. इसका आंसर है Philip Sharp and Richard Roberts. Which of the following is true about Wobble hypothesis? इसका आंसर है all of the above. Which of the following is primarily involved in post-translation modification of protein in eukaryotes? Golgi vesicles. Biofortification is done to increase nutritive value of crops. When a single gene exhibits multiple phenotypic expression, the phenomenon is known as heliotropy. The Air Prevention and Control of Pollution Act came into force in 1981. The Montreal Protocol was formulated to curtail emission which of the following? Chlorofluorocarbon. Which of the following features are not considered while using Whittaker's 5-kingdom classification? That is mode of reproduction. Which of the following enzyme class is excluded in the classification of enzymes? Lipase. जब आप पढ़ोगे classification of enzymes तो आप देखोगे उसमें से कोई भी क्लास lipase नहीं होता है. Which of the following forms of soil water is available for plants? Plants के लिए कौन सा soil water available होता है? इसका आंसर है capillary water. The diversity of species within the habitat or community is known as alpha diversity. Excess in succession is best described as successful establishment of a species in the area is called as excess. Which of the following is not true for the community in later stages of succession? इसका आंसर है linear food chain. Match the following. आपको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ. कॉलम ए में है pathways, different pathways C3, C2, C4 and CAM pathway. बी में है उनके features, तो इसका आंसर है C. C3
पाथवे में क्या बनता है, C3 पाथवे में फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है, बी बनता है, 1B, ठीक है। 2D C2 पाथवे जो था, इट इज एसोसिएटेड विद फोटो रेस्पायरेशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। A set of local populations connected by dispersing individuals is known as metapopulation. Which of the following traits are attributed to R selected population? R selected population में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्मॉल साइज्ड होते हैं और पॉपुलेशन साइज जो है वो वेरिएबल होती है, कभी पॉपुलेशन साइज ज्यादा होती है तो कभी पॉपुलेशन साइज कम होती है। इसका आंसर ए पार्ट आएगा। 70. Industrial melanism in peppered moth is an example of directional selection. Which of the following is not a character of an ideal species? इसका आंसर है it is generally isolated from each other species. Species that are reproductively isolated but morphologically similar are known as, इसका आंसर है sibling species या cryptic species। इसके दो आंसर है, ठीक है, इसके दो आंसर है। क्रिप्टिक स्पीशीज भी आप लिख सकते हैं, सिबलिंग स्पीशीज भी आप लिख सकते हैं। ऐसी स्पीशीज होती है जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी होती है बट they cannot reproduce with one another, they cannot perform sexual reproduction with one another. Binomial nomenclature was introduced by, इसका आंसर है कैस्पर बोहिन, and later it was established by Carolus Linnaeus. Acacia nilotica subspecies nilotica is a, ये कौन सा नाम है, ये नाम है ऑटोनिम। ऑटोनिम ऐसे नाम होते हैं जहां पर स्पेसिफिक एपिथेट एंड सब स्पेसिफिक एपिथेट की स्पेलिंग सेम होती है, और ऑटोनिम ट्राइनोमियल नेम होता है, ऐसा नेम जिसमें तीन पार्ट्स होते हैं और दूसरा और जो तीसरा पार्ट होता है इसकी स्पेलिंग सेम होती है, इसे कहते हैं ऑटोनिम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्रिहेंसिव टेक्सोनोमिक ट्रीटमेंट ऑफ ए टेक्सोनोमिक ग्रुप, इसे कहते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ जो होता है वो किसी पर्टिकुलर टेक्सोनोमिक ग्रुप, इट कैन बी ए जीन्स, इट कैन बी ए फैमिली, इट कैन बी ए ऑर्डर, उसके साथ डील करता है। लीनियस इन सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, इसने स्टेमिनस को यूज किया, एक तो उनकी प्रेजेंस को और उनके नंबर को। In the system of classification given by Bentham and Hooker, Apetalus, Perian, lacking flowers were placed in, ऐसे प्लांट्स जिनमें पेरियंथ नहीं होता है, सेपल्स पेटल्स नहीं होते हैं, ऐसे प्लांट्स को किस ग्रुप में रखा था बेंथम एंड हुकर ने? इसका आंसर है मोनोक्लाइमेडी। Which of the following is true about Takhtajan system of classification? इसका आंसर है monocots and dicots were given the rank of class. Which of the following families of angiosperms does not हैव एन ओव्यूल? इसका आंसर है लोरियंथेसी। लोरियंथेसी फैमिली के जो प्लांट्स है उनमें ओव्यूल्स नहीं होते इनसाइड द ओवरी। मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक साइड से ओव्यूल्स दिए गए हैं, दूसरे साइड से उनके फीचर्स दिए गए हैं। इसका आंसर है बी पार्ट। ऑर्थोट्रॉप्स ओव्यूल जो होता है ना, ये ऐसा ओव्यूल होता है जिसमें माइक्रोपायल फ्यूनिकल जो है एक लाइन में होते हैं, स्ट्रेट ओव्यूल होता है। एनाट्रॉप्स ओव्यूल सबसे कॉमन ओव्यूल होता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। Read the statements carefully and answer. Statement A. Cross pollination, the process where pollen grains are transferred from anther of one flower to stigma of another flower. बिल्कुल ठीक है। Heterostyly is the phenomenon in which a plant possesses more than one type of style. ये भी बिल्कुल ठीक है। So इसका आंसर है A and B are correct and B is a mechanism to ensure A. ठीक है। जो क्रॉस पॉलिनेशन इसके बहुत सारे मैकेनिज्म है, heterostyly एक मैकेनिज्म है। The turnpike mechanism of which type of pollen and observed in which of the following? इसका आंसर है एंटीमोफिली साल्विया। ठीक है, साल्विया जो प्लांट है इसमें एंटीमोफिली होती है, इट्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, और वो कौन सा मैकेनिज्म वहां पर दिखाते हैं? टर्न पाइप मैकेनिज्म। इन द टेट्राजोलियम टेस्ट टू चेक पोलन वायबिलिटी, द वायबल पोलन टर्न्स रेड ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेजन। Which of the following statements is true for sucrose? It is a non-reducing disaccharide. Which of the following is not true about Watson and Crick's model of DNA? इसका आंसर है bases are attached by covalent bonds. Phenylalanine and tyrosine are examples of which of the following? इसका आंसर है aromatic amino acids. Factors affecting water potential of a cell are concentration, pressure and gravity. Which among the following demonstrated that oxygen in photosynthesis came from water? It is Rubin and Kamin. Read the following statements and answer. Statement A. Emerson observed decrease in quantum yield of photosynthesis at wavelength greater than 680 nanometer. Statement B. Plants have two photosystems, first and second. दोनों ठीक है, both A and B are correct. Herbicide diuron acts by blocking electron transport chain in photosynthesis. Glycolate cycle takes place in which of the following organelles? This is C2 cycle, और ये होता है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। As the concentration of carbon dioxide in atmosphere increases, इसका आंसर है rate of photosynthesis will increase in C3 plants. Dolipur septum in fungi is found in which of the following? Basidiomycota. Question number 94. Which of the following statements best describe the reason of Mendel selecting pea plants for his experiment on inheritance? इसके दो आंसर है. These are true breeding lines. Pea can be easily cultivated.
In which of the following conditions phenotypic and genotypic ratio of 1:2:1 is obtained in progeny after selfing of F1? इसके भी दो आंसर है, one is incomplete dominance and codominance. Match the following and mark the correct option A and B. तो आपको इनको मैच करना है. इसका आंसर है A. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सुटन एंड बोरी. Law of segregation was given by Gregor Johann Mendel. Cell theory was given by Sheldon and Shaw. Semi-conservative nature of DNA was given by Michelson and Stoll. Which of the following statements is not true about genetic code? इसका आंसर है it is punctuated. Genetic code punctuated नहीं होता. Which of the following is site of attachment of amino acid in tRNA and the first amino acid of the polypeptide? तो tRNA में किस एंड पर एमाइनो एसिड को अटैच किया जाता है और पहला एमाइनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड बनता है उसमें कौन सा होता है? इसका आंसर है 3 साइट मिथ्योनिन. द टू कॉमनली यूज्ड होस्ट्स इन ह्यूमन जीनोम वायर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. Which chromosome in human genome has maximum number of genes? Chromosome number 1. The limit of resolution of light and electron microscope is 0.2 micrometer for light microscope and 2 nanometer for electron microscope. Which of the following can be used to visualize proteins within the living cells? Fluorescent microscopy. Enzymes capable of catalyzing RNA-directed DNA synthesis are known as reverse transcriptase. Which of the following is a site for storage of intracellular calcium? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहां पर कैल्शियम को स्टोर किया जाता है. साइटोसोलिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम in non-excited state is 0.1 micromolar. DNA damage checkpoints are found in which of the following phases of cell cycle? It is G1, S and G2. Cytokinesis in higher plants is mediated through which of the following? Dictyosomes. Read the statements A and B carefully and answer the following. Statement A. Programmed cell death is an active process. Statement B. Apoptosis is a series of cellular changes. इसका आंसर है both A and B are correct and B precedes A. यानी apoptosis पहले होती है, उसकी वजह से programmed cell death होती है. Read the statements A and B carefully and answer the following. Statement A. Mycorrhiza is association between fungi and roots of higher plants. बिल्कुल ठीक है. Mutualism is the interaction in which both the species are benefited. ये भी बिल्कुल ठीक है. Both A and B are correct and A is an exemplary of B. बिल्कुल ठीक. Mycorrhiza is an example of mutualism. Any attribute of an organism that enables it to survive and reproduce in its habitat is adaptation. In the name of restriction enzyme, EcoR1 or represents strain. Which of the following rays are used for mutation breeding? Gamma rays. Question number 113. Read the statements A and B carefully and answer the following. Statement A. Cancer is caused by uncontrolled cell division. ये बिल्कुल ठीक है. Cancer cells have the property of contact inhibition. ये गलत है. तो इसका आंसर है C. A is correct and B is incorrect. The technique of DNA fingerprinting was developed by Alec Jeffrey. Which of the following is also known as peat moss sphagnum? Read the statements A and B carefully and answer the following. Statement A. Laters are long, slender, tapering cells with thickening in their walls. Statement B. Laters help in reproduction in Markensia. Both A and B are true. Bryophytes are known as amphibians of plant kingdom as they need water for reproduction. Which of the following represents the correct sequence of different regions of root tip? इसका आंसर है root cap, followed by region of meristematic activity, followed by zone of elongation, then zone of maturation. Question number 119. Read the statements A and B carefully and answer the following. Statement A. Mango fruit is a drupe. ये बिल्कुल ठीक है. Statement B. Drupe develops from monocarpellary superior ovary. ये भी ठीक है. इसका आंसर है both A and B are correct. Last question is the scar on seed pod through which developed seeds were attached to the fruit is. इसका आंसर है hilum. सीड कोट पर एक छोटा सा निशान होता है. ठीक है, वो निशान क्या होता है? उसे कहते हैं hilum. So this is all about this question paper of JKPSC written exam of the subject botany for the recruitment of assistant professors held in the year 2023.